Hello, today we are going to discuss about the control flow or control structures. So, what is this control structure or control flow? So, this tells about how the execution of different instruction performs. Say for example, मान लो कि in our computer we want to perform some job. It may be some printing job, it may be some calculation, it may be some finding out a number is prime or not. तो इसके लिए we write some instructions. तो instructions कैसे execute होगा? And this tells about and this in this lecture we are going to discuss about how these instructions will be executed one by one. Say for example, मान लो कि घर में माँ बोलती है कि बाबू जाके बाजार से ब्रेड लेके आ. So what will happen? So mother बोली कुछ भी है ना, then I will वो मुझे कुछ पैसा दी, अमाउंट दी, मान लो 20 रुपीज दी. then I will go to the market, शॉपकीपर के पास जाएंगे. यहाँ पे कोई शॉपकीपर है मान लो, ओके कोई शॉपकीपर है, he is providing me the bread and I will give it to my mother. तो मैं इसको लेके आऊंगा और मम्मी को दे दूंगा. So this is the task. That means मम्मी से पैसा लेना, दुकान में जाना, ब्रेड लेना and give it to मम्मी. So these are the tasks that are performed one by one, and this type of execution is called or this type of instruction execution is called sequence control. मतलब हर एक लाइन कोड का हर एक लाइन. So this is nothing but instruction. This is one instruction. This is one instruction. So these are nothing but every instruction is performing one by one. This is called sequential instructions. Now think about the scenario. मान लो ऐसा एक सिनेरियो है, मम्मी ने बोली कि बाजार जाओ ब्रेड लेके आओ. सी गेव मी 20 रुपीज. 20 रुपीज लेके मैं दुकान गया. दुकान जाने के बाद दुकान से कुछ सामान लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए मैं दुकानदार को जब बोला कि गिव मी अ ब्रेड ऑफ 20 रुपीज, ही टोल्ड मी दैट 20 रुपीज का तो ब्रेड खत्म हो गया. देन व्हाट विल डू? तो मुझे कुछ और करना है. तो अगर 20 रुपीज का ब्रेड मिलता, देन आई विल परफॉर्म सम टास्क, देन आई विल टेक द ब्रेड एंड गिव इट टू रिटर्न बैक टू होम. घर आएंगे वापस और मम्मी को दे देंगे. सो दिस इज कॉल्ड दिस प्रीवियस वन कॉल्ड सिक्वेंशियल. बट इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये 20 रुपीज का ब्रेड नहीं है, तो हो सकता है मुझे दुकानदार को मैं 20 रुपीज दिया और बोला कि बाकी मान लो दुकान में 40 रुपीज का ब्रेड अवेलेबल है. दुकानदार जो है अपना पहचान वाले हैं, तो उनको बोलता हूं मैं, भैया और अंकल ये 20 रुपीज आप रख लो, बाद में मैं आके आपको 20 रुपीज और दे जाऊंगा. एंड आई विल गेट द ब्रेड एंड गिव इट टू माई मदर एंड टेल द थिंग. सो दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म सम टास्क, कोई भी टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रोग्राम के अंदर दोनों इंप्लीमेंट होना चाहिए. ये भी इंप्लीमेंट होगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा. बट एट द रन टाइम व्हेन द कोड इज एग्जीक्यूटिंग, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, यहाँ पे ब्रेड है 20 रुपीज का या नहीं है, आइदर यस और नो, देन वी नीड टू परफॉर्म आइदर दिस टास्क और दिस टास्क. सो दिस इज कॉल्ड डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर और डिसीजन फ्लो. ओके, सो and there can be another thing that is called loop control or iterative control structure. What is it? Say for example, I want to perform some task. Say for example, I want to print a CS, computer science. I want to print CS one time, or I want to print CS 20 times. I want to perform one task मल्टीपल टाइम और मेनी टास्क वन एट टाइम, और ग्रुप ऑफ टास्क हो सकता है, ग्रुप ऑफ बहुत सारे टास्क है. आई वांट टू परफॉर्म दीज टास्क मल्टीपल टाइम. देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या होना चाहिए? तो देयर मस्ट नॉट बी, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग लिखेंगे 20 टाइम्स प्रिंट टेप अगेन प्रिंट टेप. सो 20 टाइम्स प्रिंट टेप लिखेंगे. अगर काम एक ही है, सेम टाइप ऑफ जॉब है, तो व्हाट विल डू, वी विल हैव समथिंग, देयर मस्ट बी समथिंग. एक ही बार लिखेंगे, सिस्टम विल डू द सेम जॉब मल्टीपल टाइम. सो दिस इज कॉल्ड इटरेटिव कंट्रोल. सो इन आवर सी लैंग्वेज देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. What are those? They are also called control structures.
First one is called sequential control flow, where we execute each and every line of a code, where then comes conditional flow. Conditional flow means there are two conditions. There is flow is coming here, and if this is a condition, if the condition is true, if it is yes, then I will execute few statements, and if it is no or it is false, then I will execute other few statements. Say for example, मान लो कि दोनों नंबर के बीच maximum find out करना है. I will take two inputs A and B. I want to find out whether A is greater than B or not. If it is A is greater than B, then I will print A. If it is yes, I will print A. Other cases, in no case, I will print B. So this is another scenario. So this is called conditional flow. Another flow structure is called repetitive. Repetitive means whenever we are having a different task. What is the task? Say for example, I am trying to perform the addition value of n natural numbers. Say for example, I want to add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus ... 20. So what I will do? I can write a loop, iterative statement, and by that we can add this. The total value will be s is one variable, s equal s plus the value. So every time this value will be 1 is here, initial value 0, s is 1 added with this value s value will be 1. Again I will add this with 2, then I will add 3 here, I will add 4 here, 5 here. So every time we are performing one statement or group of statement depending on some condition, and that is called iterative flow control. Okay. So in our next video we will discuss about each of the things, how we are going to implement. Basically these things are implemented, like sequential control implemented using this conditional flow control implemented by help of if else. Okay. And repetitive, this is implemented by while, do while, and for. So in our next video we will discuss about this conditional flow and iterative flow. Thank you.